फर्स्ट प्रॉब्लम देख लीजिए बेटा. If current I is equals to 4 into t cube plus 2t. Okay, find I average in 2 seconds. I average in 2 seconds. Current is given as a function of time. Average निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था. I average is equals to integral of I into your dt divided by integral of your dt. Okay, और टाइम क्या है बेटा? t1 से लेके t2 तक. इसका भी t1 से लेके t2 तक. ठीक है. So that is equals to your I की वैल्यू कितनी है बेटा? इंटीग्रल I की वैल्यू है 4 into t cube plus of your 2t into your dt. Limits will be from 0 से लेके 2 तक. Divided by integral of dt is nothing but t. Limits are from 0 to your 2. ठीक है ना. तो इंटीग्रल ऑफ योर कितना हो जाएगा बेटा? इंटीग्रल ऑफ योर 4 into t cube into your dt लिख सकता हूँ प्लस इंटीग्रल ऑफ 2t into your dt लिख सकता हूँ. लिमिट्स आर 0 to 2. लिमिट्स आर 0 to 2 डिवाइडेड बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 2 minus 0. इसमें से 4 आउट है. इंटीग्रल ऑफ योर t cube into your dt हो जाएगा प्लस इसमें से 2 आउट. इंटीग्रल ऑफ योर t into your dt डिवाइडेड बाय योर 2 हो जाएगा. लिमिट आर 0 to 2. लिमिट्स आर 0 to your 2. So that is equals to your 4. इंटीग्रल ऑफ t cube into dt कितना हो जाएगा बेटा? t power 4 डिवाइडेड बाय 4. इंटीग्रेशन आता है ना बेसिक फर्स्ट वाला फॉर्मूला. 0 to 2 plus 2. इंटीग्रल ऑफ t into dt is nothing but t square divided by 2. लिमिट्स आर 0 to your 2 डिवाइडेड by 2. तो ये 4 चले गया, ये 2 और ये 2 चले गया. In the place of t, substitute upper limit beta. That is 2 power 4 plus this will be equal to your 2 power 2 divided by your 2. ठीक है ना. 2 power 4 कितना हो जाएगा बेटा? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. 16 plus 2 2s are 4 divided by 2. And this value will be equal to how much beta? 16 plus 4, 20. 20 divided by 2. 2 1s are 2 10s are. And this will be equal to 10 amperes. Got it? Is it clear? Is it clear बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. मान के चलिए मेरे पास करंट है I is equals to 50 into your sine 100 pi t. Calculate number A, mean value of AC over positive half cycle. Over positive half cycle. And number B, RMS value of current. RMS value of current. RMS value of your current. I value दे रखा है बेटा. I is equals to I naught into sine of your omega t. ठीक है ना. Compare with the standard equation. I is equals to your I naught into sine omega into t. I naught की जगह में क्या है बेटा? 50 है और ओमेगा की जगह क्या है मेरे पास? 100 पाई है. ठीक है ना. मीन वैल्यू पूछ रहा है. सो मीन वैल्यू फॉर योर पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी आई मीन मतलब आई एवरेज. सो दैट इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है बेटा? 2 आई नॉट डिवाइडेड बाय पाई. सो दैट इज इक्वल्स टू 2 into आई नॉट की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाय पाई. पाई की वैल्यू पाई. सो 2 बाई पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0.637 याद रख लीजिए. into 50 करना है. So that will give me the answer. करके बताइए जल्दी कितना आ रहा है? 2 by pi की वैल्यू 2 divided by 3.14 याद रख लीजिए. 2 divided by 3.14 easy calculation 0.637. So 0.637 कितना आ रहा देख लीजिए. This is question number A.
क्वेश्चन नंबर बी के लिए पूछ रहा है आरएमएस। आईआरएमएस की वैल्यू क्या होती है बेटा? आईआरएमएस इज इक्वल्स टू आई नॉट डिवाइडेड बाई √2 फॉर्मूला। आई नॉट की वैल्यू कितनी है? 50 डिवाइडेड बाई √2 एम्पियर्स। ये हो गया इसका करंट। क्लियर है? डन बेटा? Any doubt to anyone in this one? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। In an AC circuit, an alternating voltage E is equals to 200 √2 sine 100t. Unit is volt. Is connected to capacitor of capacity 1 microfarad. The RMS value of current in circuit is. चलिए बताइए। In an AC circuit, an alternating current, यानी compare it with the standard equation बेटा। Standard equation क्या होता है? E is equals to E naught into sine omega into t, यानी E naught की वैल्यू है 200 into √2 और ओमेगा की वैल्यू है 100 और कैपेसिटी दे रखा है, C की वैल्यू दे रखा है 1 माइक्रोफैरेड। It is asking the RMS value of the current in the circuit. तो IRMS का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? IRMS is equals to I naught divided by √2. तो I naught कैसे निकालेंगे बेटा? I naught is equals to your, so this will be your E naught divided by your XC, because it is connected to capacitor ना, a capacitor is being connected to your AC part. इसका रेजिस्टेंस हो गया XC, so it is equals to E naught divided by XC is equals to 1 by C omega, and this will be equal to E naught into C into your omega. तो E naught की वैल्यू कितनी है बेटा? 200 √2, कैपेसिटी की वैल्यू 10 power -6 into omega की वैल्यू 100. So this value will come out for me how much बेटा? This will be a 20 से 4, इसमें से चले जाएंगे तो 2 बच जाएगा, तो यानी this will be equal to 2 √2 into 10 to the power of -2. तो ये हो गया मेरे पास साइन नॉट की वैल्यू। तो IRMS की वैल्यू कितनी बन जाएगी अब? IRMS is equals to 2 √2 into 10 power -2 divided by your this one is √2. A √2 चले गया, and this value will be equal to how much better? 2 into 10 to the power of -2 ampere. This will be the answer. या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 20 into 10 to the power of -3 ampere. Yeah, that will come out for me 20 milliampere. क्या लिख सकता हूँ ऐसा? Clear?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बेटा। कैलकुलेट दिस इज गिवन डायग्राम। एक रेसिस्टर है, एक इंडक्टर है, and this is connected to an alternating source of EMF. This will be equal to here. ये हो गया R की वैल्यू हो गई 3 ohms और L की वैल्यू हो गई 0.4 हेनरी, ठीक है ना। और EMF जो है ना E is equals to E naught into sin omega t होता है, और that value is given in the problem as E is equals to your E naught की वैल्यू दे रखा है, just writing that one. So E value is given as of your E is equals to your 20 into sin 10t. So there is a flow of a current in this one. This is your I ampere. So यहाँ पर हो गया potential across your resistor और यहाँ पर हो गया potential across your inductor. It is nothing but XL. ठीक है ना। चलो, write the first question in this one. Calculate number A. Inductive reactance यानी XL की वैल्यू कितनी है। XL की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए बेटा। XL is equals to your L into omega. L की वैल्यू कितनी है 0.4 और ओमेगा की वैल्यू कंपेयर कर रहा हूँ ये विद E नॉट इंटू साइन ओमेगा इंटू टी। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है बेटा 10 के बराबर है। दिस विल बी इक्वल टू योर 4 ohms, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका इम्पीडेंस निकाल लीजिए Z। इम्पीडेंस मतलब क्या बेटा, अंडर रूट ऑफ योर R स्क्वायर प्लस ऑफ योर XL स्क्वायर। XL की वैल्यू आ गई L ओमेगा, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ योर R स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर प्लस XL की वैल्यू कितनी है 4, so ये हो गया 4 स्क्वायर। So that will be equal to under root of 3 square is 9, 4 square is 16, so that is root 25. यानी that will be equal to how much बेटा 5 ohms. क्लियर है। Then इसका आप जो है ना फेज भी निकाल लीजिए। 5 वैल्यू will be equal to how much, tan 5 फेज वैल्यू is equals to how much। tan 5 का वैल्यू क्या होता है बेटा, XL divided by R when AC is been passing through your RC circuit, RL circuit. So tan phi is equals to XL divided by R. XL की वैल्यू मुझे मालूम है, XL की वैल्यू आ गई 4 और R की वैल्यू है 3, so 4/3। 4/3 मतलब phi is equals to tan inverse of 4/3। अगर एग्जैक्ट एंगल में लिखना है तो आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में ये वैल्यू मालूम ही होगी। अगर ये वैल्यू होती है 5, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4, दिस इज 5, तो phi की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, tan phi is equals to 4/3 मतलब दिस विल बी 53 डिग्रीज, ठीक है ना। चलिए, देन कैलकुलेट योर इंस्टेंटेनियस और पीक करंट। आई नॉट की वैल्यू बताइए। अगर मैं पूछूं इस क्वेश्चन के लिए आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, आई नॉट वैल्यू विल बी इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय जेड। ई नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा 20 डिवाइडेड बाय जेड इज नथिंग बट इक्वल टू 5, यानी 2 5 4 एम्पियर्स, ठीक है। अगर मैं आपको इंस्टेंटेनियस करंट पूछूं दैट इज आई वैल्यू इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो आई का फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, आई इज इक्वल्स टू your I naught into your sin of your omega into t माइनस ये हो जाएगा 5 क्योंकि लैग करेगा ना, ठीक है ना। और v इज इक्वल टू क्या होता है v नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, तो इसमें से I नॉट की वैल्यू लिख लीजिए। I नॉट की वैल्यू आ गई 4 इंटू साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है बेटा प्रॉब्लम में, ओमेगा की वैल्यू है 10, यहाँ पर देख लीजिए 10, सो इट इज योर 10 इंटू टी माइनस 5, पाई की वैल्यू कितनी है 53 डिग्रीज आ गया, सो दिस विल बी द करंट, ठीक है। इज दैट क्लियर। डन बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
given I is equals to 1 by root 2 into sine और ये हो गया 100 pi t amperes और E की वैल्यू दे रखी है E is equals to 1 by root 2 into sine 100 pi t plus pi by 3 volt. ठीक है ना? So my question is the power कौन सा average? The average power in watts is how much? चलो P average का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? P average is equals to ERMS into IRMS into cos phi. ठीक है ना? तो ERMS की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? ERMS value will be equal to ERMS is equals to E naught divided by root 2. ठीक है ना? E naught की वैल्यू कितनी दे रखा है बेटा? 1 by root 2. तो ये हो गया 1 by root 2 into 1 by root 2. तो ये बन जाएगा 1 by 2. उसी तरह से IRMS. IRMS is equals to I naught divided by root 2. I naught की वैल्यू है 1 by root 2 divided by root 2. यानी this is also 1 by root 2 into root 2 that is equals to 1 by 2. ठीक है ना? So that will be equal to your 1 by 2 into this is 1 by 2 into cos phi. Phi की वैल्यू कितनी है बेटा? 5 by 3 मतलब कितना? 5 by 3 is equals to 180 divided by 3. How much बेटा? 60 degrees. Cos 60. Cos 60 is how much beta? 1 by 2. So it is equals to 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2. तो बना गया कितना? 1 by 8. आ गया सभी को? Is it clear? अगर आप लोग को प्रॉब्लम में जो है ना वर्चुअल और अपरेंट पावर पूछा, P वर्चुअल करंट पावर पूछा या अपरेंट बोल के पूछा, तो जब आप जो है ना यूज द फॉर्मूला VRMS into your IRMS बस. This will be equal to your P virtual power or apparent power. Done beta? Clear? चलिए see this question. In the given circuit, the reading of voltmeter V1 and V2 are 300 volts each. The reading of voltmeter 3 of voltmeter V3 and ammeter A are respectively. तो ये हो गया इंडक्टर, ये हो गया कैपेसिटर और ये हो गया रेसिस्टर. So this is connected to an alternating source बेटा. तो यहाँ पर एक ammeter है इसके साथ ये, and this one is connected to an alternating source of your EMF. ऐसा. तो LCR सर्किट हो गया ये, ठीक है ना? अब इसको क्या किया हुआ है? यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा हुआ है इसके पैरेलल पे. यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा हुआ है, फिर उसके साथ यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा हुआ है V2, फिर इसके साथ यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा है V3. ये हो गया V.
तो यहाँ पर हो गया V2 और यहाँ पर हो गया V3, ठीक है। दिस इज योर LCR और R की वैल्यू दे रखा है 100 ohms और इसमें से जो करंट जाएगा दिस विल बी इक्वल टू IRMS का। चलिए बताइए अभी, पहले रीड द क्वेश्चन केयरफुली। In the given circuit, the reading of voltmeters V1 and V2. V1 की वैल्यू कितनी है बेटा 300 है और इसका भी 300 है। The reading of the voltmeter V3 यानी V3 की वैल्यू कितनी है और अमीटर की रीडिंग कितनी है, ठीक है ना। और इसका पोटेंशियल दे रखा है प्रॉब्लम में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। दिस इज गिवन इन द डाटा। तो LCR सर्क्यूट है, तो LCR सर्क्यूट के लिए इंपीडेंस कितना हो जाएगा बेटा Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ योर XL माइनस ऑफ योर XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, कल मैंने करवाया था, ठीक है ना। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए सिंप्लीफाई करिए इसको। Z वैल्यू, XL की वैल्यू कितनी है बेटा L ओमेगा। In the given circuit, the reading of the voltmeter V1 and V2 are 300 volt each, isn't it? यानी Z की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा R के बराबर हो जाएगी, बिकॉज XL इज इक्वल्स टू XC आ रहा है ना। तो IRMS की वैल्यू कितनी बन जाएगी, IRMS is equals to VRMS divided by Z. That is equals to VRMS is how much 220 divided by Z is equals to R. And this will be equal to 220 divided by R. R की वैल्यू कितनी है 100, ये वाला चले गया, so that will be equal to 2.2 ampere. So ammeter will read 2.2 and voltmeter V3 will be reading how much बेटा, यहाँ पर जितना पोटेंशियल है पूरा करंट तो सेम रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन, सो V3 will be equal to how much बेटा, कितना आ गया बताइए सीरीज कॉम्बिनेशन में। V3 is equals to I into your R. I की वैल्यू कितनी है 2.2 into R की वैल्यू कितनी है 100. So this will be 22 divided by 10 into 100. ये वाला चले गया, 22 into 10 is how much for me 220 volt. Done. पावर बताइए बेटा इसमें, अगर मैं इसका पावर पूछूं व्हाट विल बी द पावर। इसके अंदर और एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, पावर इन LCR series circuit, power in an LCR series circuit with EMF E, with EMF E. P average कितना होता है बेटा, P average will be equal to VRMS IRMS into cos phi. Cos phi is what, power factor. So ERMS is how much will be E, and ERMS will be equal to E by Z. Cos phi will be equal to R by Z. तो ये हो गया मेरे पास E square into R divided by Z square. और Z वैल्यू कितनी होती है बेटा LCR सर्क्यूट के लिए, XL माइनस ऑफ योर XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है ना। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू योर E स्क्वायर इंटू R डिवाइडेड बाई Z. Z की वैल्यू हो गई यहाँ पर XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस ऑफ योर R स्क्वायर, ठीक है ना। सो दैट इज योर पावर फैक्टर। अगर XL XC भी लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं आप, P एवरेज विल बी इक्वल टू योर E square into R divided by under root of your, this will be equal to your XL minus XC, a root और a root इस पे चले जाएगा, and this will be equal to your L omega minus 1 by C omega का whole square. Done. Under root of your L square E square into R, P average की वैल्यू लिख रहा हूँ ना, so P average is equals to your done plus of your R square. Done.
कहीं कुछ गलत किया क्या रखो मैंने? z की वैल्यू xl माइनस xc होल स्क्वायर, ये z स्क्वायर है ना बेटा, ये पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा, isn't it? अगर ये होल स्क्वायर हो गया तो ये रूट और ये स्क्वायर चले जाएगा, so that is the reason we are getting L omega minus 1 by C omega whole square plus R square. So this will be your P average. यहाँ पर ये साइन प्लस किया डन। आई बात समझ में? ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला याद है किसी को? So write this question. A transformer is used to light 100 watt and 120 volt lamp from 220 volt mains. 220 volt mains. If main current is 0.5 ampere, is 0.5 ampere, the efficiency of transformer, the efficiency of transformer is, I'll give the options, 50%, 90%, 10% and 30%. चलो खत्म करो जल्दी से। ट्रांसफार्मर का रिलेशन, ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू लाइट ऑफ 100 watt 100 volt, पावर दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है फ्रॉम 220 volt means if the main current is 0.5 ampere the efficiency will be equal to your how much? Efficiency का फॉर्मूला बेटा आउटपुट पावर divided by input power into 100, isn't it? So P output कितना आ रहा है बेटा? So if I'm writing for this one, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक प्राइमरी कॉइल होता है which is connected to your AC source और एक सेकेंडरी कॉइल होता है which is connected to your load resistance R. So current in the primary will be equal to how much beta? 220 volt, isn't it? And current in your primary is equals to how much? 0.5 ampere, that is given main current. Secondary के लिए यानी P output is equals to 100 watt and EMF of the secondary will be equal to 110 watt. So that will be equal to your output कितना है मेरे पास 100 divided by input power will be equal to how much beta? EP into your IP primary into 100, power का formula V into I, यानी ये हो गया 100 divided by EP is given as 220 into IP is given as 0.5 into 100, ठीक है ना? So this value will become how much में बेटा? ये 0.5 में 5 by 0.5 is nothing but 1 by 2, isn't it? 1 by 2 मतलब this will become how much में बेटा? 11. सही ना? This is your 10 A0 यहाँ पर चले जाएगा, ये हो जाएगा 1000 divided by 22 into 0.5 is 1 by 2, 2 ones are 2 11s are, and this will be equal to 1000 divided by 11, that is approximately it will come for me 90.9%, यानी 90% लिख सकता हूँ। Done?
ये टर्म एक बार याद रख लीजिए बेटा, टर्न रेशियो किसको बोलते हैं बेटा? टर्न्स रेशियो और ट्रांसफार्मर रेशियो और ट्रांसफार्मर रेशियो it is represented by letter K, and K will be equal to n of secondary divided by n of primary. Secondary number of turns divided by primary number of turns is known as of your transformer ratio. Okay, अगर K की value greater than 1 है, it will be your step up. अगर K की value lesser than 1 है, it will be equal to your step down. Done? Done बेटा? चलो, ये क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई करके बताइए. An ideal transformer has 100 turns in the primary, and 250 turns in the secondary. Done. The peak value of AC is 28 volt. The RMS secondary voltage is nearest to. First question, answer 50. Next one is 70. Next one is 100. Next one is 40. चलिए करिए. An ideal transformer has 100 turns in the primary, and a number of turns in the primary is equals to 100. Number of turns in the secondary will be equal to 250. The peak value of the AC is 28 volt. यानी V primary will be equal to 28 volt. The RMS secondary voltage will be equal to how much? Oh my god. यानी VRMS की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? VRMS is equals to V0 divided by root 2. सेकेंडरी के लिए पूछ रहा है तो V0 ऑफ योर सेकेंडरी, ये तो मैक्सिमम ऑफ योर प्राइमरी है, तो मैं यहां से हम दोनों का रेशियो निकाल सकता हूँ. V सेकेंडरी मैक्सिमा डिवाइडेड बाय V प्राइमरी का मैक्सिमा, P0 मतलब मैक्सिमा, NS डिवाइडेड बाय योर NP. NS की वैल्यू है 250 और NP की वैल्यू है 100, यानी दिस विल बी 25 डिवाइडेड बाय 10. सो V सेकेंडरी का पीक वैल्यू जो है ना, दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 10 इनटू पोटेंशियल ऑफ योर प्राइमरी, यानी 25 divided by 10 into V0 parallel will be equal to how much for me? 28. ठीक है ना? So 25 divided by 10 into 28 कितना आ रहा देख लीजिए. 5 2 जा 5 5 जा 2 1 जा 2 4 जा कितना आ रहा? 70 volt. तो VRMS will be equal to हो गया 70 divided by root 2. 70 divided by root 2 is approximately how much beta? 1 by root 2 is 1.414, यानी 49.49 volts. That means approximately I can take it as 50 volt.
A will be the answer. Done. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है बेटा, वोल्टेज रिड्यूस होता है, करंट इंक्रीज होता है कि नहीं, याद रख लीजिए पीरियोडिकल क्वेश्चंस के लिए। डन। चलिए, सो आप लोग थोड़े 10-15 क्वेश्चंस अपनी तरफ से भी एक बार निकाल के पीवाई के क्वेश्चंस कर लीजिए बेटा, पहले एक बार फॉर्मुलास लिख लीजिए, then you try to do the problems related to that one, ठीक है। क्लियर। ओके चलो, so by this we have almost all completed AC। आप लोग जरा निकाल के एक बार पढ़िए। चौक कॉइल एक है, चौक कॉइल ऑलरेडी आपको मैंने बताया था, तो एक बार निकाल के करिए। मैग्नेटिक एनर्जीज वगैरह का फॉर्मूला से, या मैग्नेटिक एनर्जी EMI में बताया था मैंने, एनर्जी ऑफ इंडक्टर इज योर हाफ इंटू L इंटू I स्क्वायर।